Hello everyone, welcome to OASHUB. So welcome to also daily news analysis. So आज analysis रे आमे देखिबा आज संडे एंड थर्ड आमे देखिबा सेप्टेम्बर 2023 रा आमे देखिबा इंपोर्टेंट न्यूज. So important news रा आमे देखिबा आमे first important news of the day is that first one, that is the committee. Salve Saha on the simultaneous election committee. Election panel, or I would say for the committee for the simultaneous election. So ये बहुत ही ज़्यादा एंड इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है. द सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बार क्या किया कि कमेटी बनाए कि प्राइम मिनिस्टर ऑलवेज टॉक अबाउट द वन नेशन वन इलेक्शन. दैट मीन्स फॉर द व्हाट पर्पज ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन. बहुत दिन हो गया ऐसे चलते आ रहा है, बहुत दिन से प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं कि हमें एक नेशन एक इलेक्शन चाहिए. सो ये बहुत थोड़ा हमको देखने को मिली कि वन नेशन वन इलेक्शन हमको देखने को मिले. ना दिस टाइम्स द सेंट्रल गवर्नमेंट has announced a high-level committee headed by the former Prime Minister Ram Nath Kovind to examine the concept of simultaneous election as its option and to have the politician in the, I would say in the panel as well, because that must have the political concession as well. So that is where the political members are also parties rachanti, lawyers rachanti, and also the former, I would say the headed by whom, that is the former President of India, Ram Nath Kovind. Now ये committee कौन पाए? This committee will examine what? The committee includes, the panel includes Advocate Hari Salve, former chairman of 15th Finance Commissioner, that is N.K. Singh, and retired Lok Sabha Secretary General, that is Subhas C. Kashyap, and former Vigilance Commission Sanjay Kutharia, Union Law Minister Arjun Ram Meghwal, and will have the meeting of the special rival. And obviously, other panels members are also there. So here Azad also there. So these are the panel members, those who are for the one nation, one election by panel Karaichi. Now what they will discuss? They will discuss, the committee will include examination, like what kind of, they will recommend. Committee ro kamo hela kono na committee will recommend kono kariya padibo, whether this is feasible to have the one nation one election, whether to have the election at the same times for the panchayat election, for the municipal election, for the assembly election, for the MP election, for the parliament, every assembly, whether this is possible to conduct one nation one election. All sort of election would be done at a single phase, at a single time. First option, what would be the lacunas konasibo? What would be happens to the manpower? What will happens to the machines like EVM, BB parts? How the committee will assess all the logistic and manpower requirement? How it would be? How they will work? Okay, whether that would be a challenge? If the challenges will come, what would be the challenges? Whether we will have option अच्छी कि नहीं? जदि option अच्छी parliament को amend करिया को पड़िबो कि नहीं? Or ratification of the state is required or not, the representation to the People's Act 1915 or the representation of the People's Act 1951, whether they required to be amended, jodi amendment hobo, co-pakar amendment hobo, whether it would be the special amendment, or it would be, I would say, special amendment with the ratification of the states. So all the that means options are going to be discussed, all the options. Now the committee would be, I would say it would be the committee would be high level committee headed by Ram Nath Kovind and other members. तो ये मध्य हमको इम्पोर्टेंस, सो दैट वुड बी द इम्पोर्टेंट हम देखिबा फ्रॉम द ना हिराकुद रे कोन हिची गोटे न्यूज दियाची कि हिराकुद जेतबे बंध बांधी थिला, जेतबे प्रोजेक्ट हेतला 1957 रे, सेतबे बहुत सारा गोटे गांव अछि, से गांव को बहुत सारा लोक डिस्प्लेस हेथिले, बट से माने आजि पंत तांकर अधिकार पाइ पन नथिले. दे डिडंट गिवन एनी व्हाट आई विल असिस्टेंस और द हाउस to that displaced people. Now these 1,749 families of the Jharsuguda districts were now, they were dispatched, they were displaced when the Hirakud Dam was constructed, or it was constructed. Now this family got justice. There would be now what I would say old, that decades of legacy, the Odisha government decided that to provide the land patta, the record of land rights to the 1,749 families. So this I will write to the social justice. So these families will now get their right back who were deprived of their land right in 1957. So that would be a development for the Odisha related.
नाउ सो ये इंसिडेंट तो सबको पता है कि CBI charges 3 railway staffs, those who were involved in Bhanagar railway, one of the India's most devastated railway accidents, the train accident. So where 3 trains were involved into a collision with one after another in Baleshwar districts of Odisha. Here you can see the tragedy. Thousands of people died. Hundreds of and thousands also injured. You can see the horror of that picture. Even more than 200 bodies. Still, they have no relatives, or the relatives have not yet collected their bodies. So that is also one of the scene. So now two persons, that is what Amir Khan, that SSE signal Soro, Pappu Kumar, technician Baleshwars, were charge listed. So that means I would say Arun Kumar, Mahant, Amir Khan, and another person was Pappu Kumar. So these 3 peoples, the CBI has charge sheeted against these 3 peoples. So that is Bahanagar train accident. You can write in what I would say man-made disaster or the disaster management in paper 3. In your paper 3 you can put this example, how to avoid such kind of accident, and at callous nature of the officers, how men's were I would say what human or the manpower, and that will I would say the callousness that led to the what one of the highest devastated accident in centuries. Now comes to the one of the again the ISRO success को देखिबा. ISRO success mission Aditya or L1 is a spot, that is what Lagrange point. Now mission Aditya was India's first sun mission. That would be what India's first sun mission. आप पूर्व में मून मिशन देखि सारिछे, मंगलयान देखि सारिछे, चंद्रयान देखि सारिछे, शुक्रयान मध्ये आगुको अछि, and this is what sun mission or mission Aditya है ना. तो ये कोठी के लॉन्च कराई इट्स ए पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है ना, प्लेस्ड आदित्य 1 सैटेलाइट इनटू द लोअर ऑर्बिट. सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द अगेन वन इट्स अचीवमेंट टू द इसरो एंड टू इंडिया एज वेल. सो ये बहुत ही इंपोर्टेंट डेवलपमेंट आदित्य 1. सो टू बैक डेवलपमेंट हमको देखा जाउछि. एंड जदि हम देखबा द फॉर्मर स्पीकर ऑफ द हाउस ओडिसा रो हम देखबा पांचवी सूर्य नारायण पात्र. So this person you can remember, this person, that is what Javelin Star of Odisha. So this person you can remember, who that means what, that is Kishore Jena in Bhubaneswar, that person who entered into the final list. So that is why this one is. स्वदेश दर्शन to boost the Koraput. स्वदेश दर्शन means निज देश को हमें दर्शन करिबा, to explore the unexplored, that is the what I'm going areas in Odisha and the rest of the India. So this darshan for that Koraput को हमको से develop कराउची, जमती तमरो देवमाली, Kolaf, Maskon, these are the areas of the Koraputs would be under the Sodesh darshan. So there would be what like the Gupteswar पाखरे गोटे इमेज तुम देखि परिबो. एंड ए एरिया को आम स्वदेश दर्शन अर्थात आम कह डोमेस्टिक टूरिज्म को पोस्ट करवा पुस्ट करवा अथवा बूस्ट करने ये स्कीम करा सो दैट आम टूरिज्म बूस्ट हम. तेणुक यहाँ स्वदेश दर्शन अर्थात टू बूस्ट द व्हाट टूरिज्म इन द रूरल सेक्टर. बाकी अर्बन फ्लड भुवनेश्वर बहुत हुए. हियर यू कैन सी नयापल्ली हालत कौन है. And see, this one is one of the natural disaster. Odisha hits by 61,000 lightning strikes in within 2 hours. Kali evening ray, it was 61,000 lightning across the state. Can you imagine that? 2 people died. Okay, lightning जितने मारी था गोटे cloud to cloud मारी था, आउ गोटे था cloud to vertical मारी था, गोटे cloud to surface. गोटे क्लाउड टू सरफेस को था व्हिच डेंजरियस जहाँद्वारा लोक मरे, आ गोटे क्लाउड टू क्लाउड मारी था ताद्वारा लोक मरती ना. तो जितेबले क्लाउड टू जितेबले देखुच तो लाइटनिंग होची एंड दैट लाइटनिंग इज व्हाट क्लाउड टू सरफेस और लैंड, दैट टाइम यू शुड अवॉइड गोइंग आउटसाइड द होम को अवॉइड करवा दरकार. एंड लाइटनिंग होची गोटे स्टेट डिजास्टर बा नेचुरल डिजास्टर डिक्लेयर हो सारी. बाकी कैंसर हॉस्पिटल तुम बरगढ़ हम बोली गवर्नमेंट कही सारी, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट.
देन बाकी तो तुम जान नई रे पानी नहीं सुखी लाइगलानी फार्मर्स आर फेसिंग वेरी डिफिकल्टीज कानाल वाटर आसुनी मानसून ए वर्ष बहुत कम है दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम देन नाउ कम्स योर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक दैट इज द व्हाट आदित्य L1 सेट ऑफ अहेड ऑफ इट्स डेट ऑन संडे डेट पूर्व लॉन्च करा जाइछि कोठी के लॉन्च करा जाइछि देखो लैग्रेंज पॉइंट और L1 हाउ मेनी लैग्रेंज पॉइंट आर देयर आज ऑफ नाउ 5 लैग्रेंज पॉइंट कहले दीटा प्लैनेट्स भितरे किंपा स्टार आउ गोटे प्लैनेट्स भितरे एरिया जोटा कि ग्रेविटीटा न्यूट्रल थिबो बा गोटे प्लेस जोटी सैटेलाइट को आम इजिली रखी परिबा और इन ए स्टेबिलिटी विल प्रोवाइड सो दिस पॉइंट्स आर कॉल्ड एज द लैग्रेंज पॉइंट सो L1 सो PSLV रॉकेट रू आपको छड़ा जाइछि सेटा मध्य मन रखो दैट इज द PSLV फ्रॉम द व्हाट श्रीहरिकोटा ऑब्वियसली फ्रॉम द श्रीहरिकोटा रू ही आपको लॉन्च करा छिबो सो दैट मींस आपको प्री लॉन्च ए ही सारिछि so this would be PSLV's 59th flight and the 25th mission with XL figuring so that means এটা बहुत important कारण केते तम रॉकेट थिला that is the PSLV 59 for what mission of the Aditya L1 okay एटी के तुम मन रखिबा को now what would be the objective होची कोन स्टडी करिबा सोलार विंड को स्टडी करिबा कोरोना को एटमॉस्फेयर को स्टडी करिबा so this is climate change को स्टडी करिबा and outer atmosphere of the sun रो outer atmosphere को स्टडी करिबा प्लाज्मा को स्टडी करिबा कोरोना को स्टडी करिबा सोलार विंड को स्टडी करिबा तो सोलार फ्लेयर को स्टडी करिबा दिस वुड बी द ऑब्जेक्टिव रहबा तमर घर दैट इज मिशन आदित्य 1 देन आम नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल कौन अच्छी नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल जदि आम देखा दैट इज वन नेशन वन इलेक्शन वन अपोजिशन तो अगेन एथरे बेसी किसी ना देख देख जदि एथरे आम देखा तो वन नेशन वन इलेक्शन उपर अच्छी एंड वन अपोजिशन जोटा कि द इंडिया जानी सारी ना वन नेशन वन इलेक्शन हेले बेनिफिट्स कौन बेनिफिट जदि तुम देख ये तो आसो तुम पेपर 2 रे आसो गवर्नेंस पार्ट रे आसो रिफॉर्म रे आम देखा वन नेशन वन इलेक्शन रो बेनिफिट्स होची सो दैट जदि आम देखा 5 वर्ष पर गोटे गवर्नमेंट फॉर्मेशन होता है किंतु से गवर्नमेंट तुम देखो 4 वर्ष इलेक्शन मातिची ए वर्ष असेंबली इलेक्शन आम देश में सबुठ बिगेस्ट प्रॉब्लम होची 365 दिन इलेक्शन होता है कोठी वार्ड इलेक्शन होची कोठी कॉर्पोरेट इलेक्शन होची कोठी पंचायत इलेक्शन होची कोठी आम देखा बार काउंसिल इलेक्शन होची कोठी आम देखा मतलब बार काउंसिल इलेक्शन को ये आड करूनी बट एग्जांपल दूची कोठी हमर असेंबली इलेक्शन होची केतले प्रेसिडेंट इलेक्शन होची केतले राज्यसभा इलेक्शन होची ये इलेक्शन चलीची खाली देश आम देश रे ऑलमोस्ट आम देखा कोठी मतलब आट ए टाइम भी तो असेंबली इलेक्शन होनी ना प्रत्येक मासरे प्रत्येक दिन रे किसी ना किसी इलेक्शन आम देश रे होची प्रत्येक मासरे प्रत्येक दिन रे किसी ना किसी आम देश रे इलेक्शन होची तेणु करके जदि आम देखा तेणु करके जदि आम देखा ये कौन हम ना आम इलेक्शन तो हो इलेक्शन तार लॉस कौन हो लॉस हो तेणु ये जो लॉस हमको देखा जाऊँ इलेक्शन द्वारा तेणु ये लॉस माने आम कह पॉलिटिकल पार्टीज मैंने सब वर्ष सारा इलेक्शन में मातुंट तो देश कथा भावे के राज्य कथा के भावे लोकों कथा के भावे तेणु वन नेशन वन इलेक्शन रे कौन कर वर्ष को गोटे मस आम फिक्स करवा फॉर एग्जांपल मु कहूँ कि गोटे मस खाली इलेक्शन हम बस इलेक्शन खत्म बाकी आम देखा दैट मीन 4 years 11 months आम पॉलिसी मेकिंग रे कॉन्सेंट्रेट करवा और 4 years लेट्स से गोटे वर्ष खाली इलेक्शन जो एटलिस्ट 4 वर्ष पॉलिसी मेकिंग रे ध्यान दिया प्लस आउ कौन हम लेस एक्सपेंडिचर अदरवाइज वर्ष सारा जब इलेक्शन हम डेली एक्सपेंडिचर हम डेली खर्च हम तेणु करके खर्च कम हम गवर्नेंस इजी हम स्टेबिलिटी आसो लोकों भितर अवेयरनेस बढ़ो तो कोठी ना कोठी आम कह पीपल सेंट्रिक हवा दरकार जदियो तापाई तार बहुत चैलेंजेस अच्छी जमती कि एते सारा मैन पावर दरकार पुलिस दरकार मशीन दरकार लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छी पॉलिटिकल पार्टी मैंने राजी हवा दरकार देन भोटर रो एजुकेशन रहा दरकार पता चला जानी पारुनी असेंबली भोट कोठी पकड़ा पड़ो एमपी भोट कोठी पकड़ा पड़ो पंचायत में कोठी अर्बन पे तो ये बहुत सारा चैलेंजेस अच्छी मु कहूनी कि चैलेंजेस नहीं बहुत सारा चैलेंजेस अच्छी बट बेनिफिट्स अच्छी तो दैट वुड भी आम से कहवा एंड स्पेशल सेशन चलती
बर्तमान पार्लियामेंट स्पेशल सेशन चलती आम तुम देखिए स्पेशल सेशन गोटे चलती जोटा कि मोदी जी अनाउंस कर मोदी जी तो कही ओबियसली आम कह सेक्रेटरी अनाउंस कर देन आम आसवा इम्पोर्टान्स जदि आम इम्पोर्टान्स न्यूज को आसवा तो आईआर पार्ट तो ओपीएससी ना तुम कनाडा सहित आम टक चली जहाँ भी हो दैट मीन्स आम देखा तो ये गोटे देखिपर द पार्लियामेंट्री पैनल सजेस्ट फॉर द सेपरेट लॉ फॉर द ट्राइबल जस्टिस सिस्टम ये देख सजेस्ट कर किसी आसी ना आसीगला आम या डिस्कस करवा से किसी बट पार्लियामेंट स्पेशल सेशन चली क्वेश्चन आवर एना तो ये स्पेशल सेशन टी देखिए जोटा कि फ्रॉम 18 सेप्टेम्बर रु तुम 22 सेप्टेम्बर सॉरी इट वुड बी चलनी ये चलो ओके एट स्पेशल सेशन विदाउट क्वेश्चन आवर्स तुम रही पार हाँ प्राइवेट दैट मीन्स ये कौन विदाउट प्राइवेट मेंबर बिल्स रही तुम कह स्पेशल सेशन कौन ना स्पेशल सेशन दैट वुड बी हेल्ड फ्रॉम द 18th of October that is what September to the 22 of the September that special session will held without any questions hour without any private members bill or the business so that we will ensure that there would be more work the work of the business is were pending that could be resolved at least business को हमें enhance कर परिबा ओके गवर्नमेंट रो जहाँ टार्गेट थिला तो से टार्गेट को से अचीव करे पिन चाहिबो सो दैट वुड बी देयर जदि हम देखो पार्लियामेंट्री पैनल ऑन सेपरेट दैट मीन्स सेपरेट लॉ ऑन द ट्राइबल जस्टिस सिस्टम को देखिबा सो दैट राज्यसभा से कहते कि आम डिपार्टमेंट ऑफ पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमिटी को दिया जाइए कि ट्राइबल जस्टिस सिस्टम एंड द रेगुलर दैट इज आम कह जस्टिस सिस्टम ऑफ इंडिया तो ये आम देखिए गोटे रेगुलर जस्टिस अच्छी आ गोटे ट्राइबल जस्टिस को आम डिवाइड करवा जमती सोशियो इकोनोमिक जहाँ प्रोब्लेम्स हो ताको हमें सेपरेट करा बट ये जो पूरा आसीज आमर न्यूज रे पूरा आम से डिस्कस करवा एबे ताको डिस्कस करूनी मु जो पूरा डिटेल फीचर आसीज से ताको डिस्कस करवा लास्ट आर्टिकल को मुझे भी ना लास्ट आर्टिकल्स तो लास्ट आर्टिकल्स बहुत इंपोर्टेंस तुम अच्छी इंटरस्टेट रिलेशन तो ये देखिपर दैट इज द व्हाट इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट ओपीएससी सिलेबस तुम इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट मत दिखाई ना ये रिवर डिस्प्यूट क्या दिखाई ये केस स्टडी ये दिखाई गोटे केस स्टडी क्या कावेरी रिवर क्या दिखाई कावेरी रिवर ना कावेरी रिवर मैपिंग देखी दियो कावेरी ओरिजिन फ्रॉम द व्हाट ताल कावेरी ब्रह्मगिरी हिल्स दैट इज द कोडागु डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक वेस्टर्न घाट ओरिजिन होची देन ड्रेन्स टू द बे ऑफ बेंगल को से जाऊँगी आर मैपिंग रे देखी दियो लेफ्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी होची कावनी भावनी तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जी तुम देख दैट हेमावती आक्रावती ये सब तुम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑलरेडी जियोग्राफी पढ़ाई रखी ना प्रॉब्लम्स कौन मैपिंग तो आम देखिले आप इंपोर्टेंट डैम्स अच्छी जमी मेटूर डैम वन द ओल्डेस्ट डैम आनीकट ग्रांट एटिंगर मेटूर हो गला बाकी तुम कृष्णा सागर राज अच्छी है दैट इज ऑल्सो दैट and the important dam is ताले हमें देखिए important ना controversy कोठी that is the मेकाडाटू डैम कर्नाटक कंस्ट्रक्ट करुची प्रॉब्लम होची काकू तमिलनाडु ना डैम कंस्ट्रक्शन हैला परे टीएन बा तमिलनाडु पार्ट रे एमती सुखा पड़ी जिवो कोन हे सुखा पड़ी जिवो पानी आसी परिबो नहीं एपटे डैम रे वाटर एबो कर्नाटक रे एपटे सुखा पड़ी जिवो ऑलरेडी कृष्णा सागर डैम अच्छी बाकी सारा डैम अच्छी तेणु करके पूरा कावेरी ऊपर आउ गोटे डैम कले जो लो रिपारियन स्टेट अच्छी तो लो रिपारियन स्टेट दैट इज मु जाको कहबी कोन तमिलनाडु सफर हम तेणु करके द डिस्प्यूट्स बिटवीन व्हाट आई वुड से तमिलनाडु एंड कर्नाटक भितर डिस्प्यूट वाटर शेयरिंग को लेकिन कहार द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मेकाडाटू डैम है ना कजेस ऑफ डिस्प्यूट तो बहुत अच्छी क्या बाकी सारा जमी हेमादेवती हेरांगी ये सब रिवर उपर डैम करके रखी तेणु ताकू भी नहीं आमर ऑब्जेक्शन अच्छी तेणुक इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट ये किसी छोटिया कथा नुआ नुह ये तुम अच्छी रवि ब्यास डिस्प्यूट अच्छी ये नर्मदा अच्छी गोदावरी कृष्णा कावेरी वंशधारा महानदी महादया है ना ब्रह्मपुत्र ये सब डिस्प्यूटेड रिवर इन इंडिया तो बहुत सारा डिस्प्यूटेड रिवर अच्छी तो इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट पर आम देखे इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 तो 55-56 रही है ना जोटा कि आम 56 एंड 55-56 रही कौन कराए ट्राइब्यूनल कराए आर्टिकल 262 अंडर ट्राइब्यूनल्स कराए जो ट्राइब्यूनल डिसीजनटा फाइनल थाए तो ओरिजिन जदि आम अच्छा देख सॉल्यूशन कौन थाए सॉल्यूशन होची सेंट्रल गवर्नमेंट एमिकेबल सॉल्यूशन करि पारे दीटा पार्टी को डाकी कि अदरवाइज तुम ट्राइब्यूनल करा इंटरस्टेट
वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल जार भर्डिक्ट फाइनाल रहिबो को अनुसार ट्राइब्यूनल करा जिवो 1955 एंड 56 अंडर करा जिवो आर्टिकल केते 262 तुमको इधर आर्टिकल पचारिबो नाले एक्ट पचारिबो नाले सॉल्यूशन हबार दीटा केमिति उपाय अछि एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट दीटा पार्टी को डाकी बसै के समाधान करिवो नहले ट्राइब्यूनल करा जिवो जदि दीटा पार्टी न होला ना ओरिजिन कोन कावेरी रो जदि हम डिस्प्यूट को देखिबा तो ये कावेरी आगुरी अच्छी कारण देख प्रथम तो है रिअर्गानाइजेशन ऑफ स्टेट तुम तमिलनाडु गोटे स्टेट ना दैट मीन्स केरला अच्छी पुडुचेरी अच्छी तीन टा अच्छी दैट मीन्स आम देखा डिस्प्यूट केवे 1807 बिटवीन तो आम कह से मैसूर था एपटे माड्रास था से तो कर्णाटक नाला तमिल नाला ये से डिस्प्यूट हो ब्रिटिश राज टू बुझे कि नहीं तो जहाँ भी हो दैट मीन्स मैसूर कौन कले गोटे रिजर्व कले कृष्णा सागर कले तो से ऑब्जेक्ट आसला माड्रास ताको ऑब्जेक्ट कले तापर दैट मीन्स आम देखा माड्रास से टाइम रे कौन कले ऑब्जेक्ट मध्य करिसेंती तो कर्णाटक फ्रॉम टाइम टू टाइम आम देखा मिले कौन करमती करमती हेरांगी कले हेमावती डैम कले जमती बहुत सारा डैम्स आसला एंड फाइनाली जो मेकाडटू डैम करने कथा उठिला ना एबे आउरी कौन है झड़ सृष्टि है कर्णाटक एम्स टू बिल्ड द रिजर्वर अक्रॉस द कावेरी मेकाडटू नियर दैट इज व्हाट कानाकापुरा तालुक द फर्स्ट प्रपोज्ड along the शिव समुद्र हाइड्रो प्रोजेक्ट एट शिमोगा शिव समुद्र भी अच्छी तेणु करिकी ये सब मेकाडटू लोकेट होइछि बॉर्डर रे अछि ये बॉर्डर एरिया रे पूरा हमर कोन कर्णाटक आउ जदि हम देखा तमिलनाडु बॉर्डर रे सो दैट बहुत सारा वाटर तांकु रहिजबो आंकु पानी कमी जिवो तेणु करिकी आंक भितर वर्तमान डिस्प्यूट हेछि तेणु ये डिस्प्यूट तमे मध्ये तुमको डायरेक्टली पचारि पारे ये केस स्टडीज तेणु करिकी एई भले हम न्यूज आपन मन को नै कि आसीबो शॉर्ट मु चाहिबे केते शॉर्ट रही परिबो प्रिसाइज हे परिबो जहां भी सजेशन अछि सजेशन दियंतु कमेंट्स करंतु शेयर करंतु लाइक्स करंतु जहां भी सजेशन मोस्ट welcome. With this, I will end. Thank you, everyone.